Good morning, everyone. Good morning. Good morning. जय श्री कृष्ण रमेश कैसे हो? गुड मॉर्निंग जैद जी. MTSL फॉलो करके चलो. गुड मॉर्निंग रितेश. कोई भी डाउट्स है पूछो. We'll start and keep the charts clean. We'll start in 2 minutes. गुड मॉर्निंग वरुण. कुछ भी हाँ. अगस्त्या क्या कर रहे हो यार? एक सेकेंड रुको. वो ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले एक दिखा रहा हो, वो चीज देख लो. ठीक है. अभी भी आइसबर्ग जोन में वेट करो. नहीं, दो दो ही लोग ऐड ऑन किए हैं, उतना है. रेस्ट ऑल इज ऑन आईडी ट्रेड. सो गाइस, कोई भी डाउट्स है प्लीज डू आस्क बिफोर स्टार्टिंग माय एनालिसिस. क्लियर कट हमने एक चीज एक्सप्लेन की थी लास्ट सेशन में. मार्केट ऊपर जा रहा है, दैट्स टोटली फाइन. एक रिजेक्शन लेगा, वहां से ऐड ऑन करो. एग्जैक्टली फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ एक्शन वी हैड गॉट अ ट्रेड, राइट. विद दैट कंटिन्यूटी स्टिल होल्डिंग में है. नया स्विंग एड ऑन, राइट. 3 एड ऑन पॉइंट्स में ऐड हुई है. 2 3 विंग सेटअप में, एक S2P1 सेटअप में, एंड एक कंटिन्यूटी इन द मोमेंट. आज का दिन का आईडी ट्रेड चल रहा है जो कि इन पर्सपेक्टिव ऑफ वर्किंग ऑर्डर विच इज रनिंग विथ 80 पिप्स. गुड मॉर्निंग आर्या. रितेश, बुक से कोई डाउट है प्लीज डू आस्क. गुड मॉर्निंग सुदेश. जैद जी कोई डाउट है पूछो. जो जो अभी आए हो स्ट्रीम में, वेलकम टू द स्ट्रीम. Only one thing, just make sure that don't execute the trade in running or FOMO. वेट करो, आज का दिन भी अच्छा खासा मूव मिलने वाला है. एग्जीक्यूट द ट्रेड्स विद सेटअप. डोंट हरी एंड एग्जीक्यूट. ठीक है. ओनली वन रिक्वेस्ट, हरी हरी में एग्जीक्यूट मत करना. बहुत ट्रेड्स मिलेंगे आज भी.
Nitesh, please explain once three wing. Definitely. Three wing chapter use kar lo so that it will be easier. There are two variations of three wings. Sir, while backtesting, I had an instant where market gave M1 on log as well as short, long and as well as short. Then it proceeded to fulfill, then dropped to the another. My question is, does market keep a pending structure of M1? I'll come to that point earlier. Sir, getting confused in how to read the volume. For example, 10th October, UTC gave a high volume with a bearish wick. So shouldn't we look for a short? I'll come to that point, Ritesh. Okay. M2 and then fulfill it later. No, sir. As of now, no doubts. This live session were a boon for me. Many concepts which I did not focus got clear. My analysis is matching. Perfect. So first, let me start with the analysis. Then we'll come to Arya's question. Then Sudhir's one setup, and then Ritesh stuff. Okay. So in perspective of this, what is the major thing that you guys have to follow? Right? Step by step, let's get into the play. जो हमारा लास्ट लाइव स्ट्रीमिंग है वहां पे जाके देखो दिस वाज एग्जैक्टली डिमांड 150% विद द डिमांड 150% क्रिएशन यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप पॉइंट क्रिएट हुई थी विदाउट द विक right? So market continued the movement 1, 2, 3, 4 candles. We did not execute the trades. We were waiting for a setup. We got an intact with the intact. The formation was S2B1. With S2B1 formation, we had a minimality M1 formation, right? So in this minimality M1 formation, what is the first line of conduct that you will be working on? The supply, right? So we have already marked and kept. So which is this supply, which will get into the play. जो कि रेड में है this supply will be our new allocation point. When this supply get into the play, how do you look? High wick range में हमेशा wick से calculate होती है तो calibrate entirely with the wick calibration M1 formation M1 form होने के बाद continuity in the movement. First target 150, second target 200. रिट्रेस होगा रिट्रेस होने के बाद ही कंटिन्यूटी में मूवमेंट दिखने को मिलेगी सो वी हैड गॉट बोथ द facilitated movements from M1 150% and 200%, right? At this range, यहाँ पे हर एक लोगों को कंफ्यूज होगा कि लाइक इंटैक्ट लेवल तो है मूवमेंट कहाँ तक आएगा what is the first thing that you do? Draw a demand. Once the demand is drawn, allot it with the supply which gets converted into the demand. 100% break and continue. When 100% break and continue is showcased, what is the next step that will be played? Because we don't have any retracement, 200% mapping, right? So when the 200% mapping came into the play, if you notice, there was just a slight wick range and then the closure of 200 was confirmed at this point. With that, we got an execution on this red candle because there is a formation. With the formation, we look for an execution, right? So that was the first execution point. Carry forward में minimality मिली थी. Minimality मिलने के बाद market ने 150% से rejection लिया. Why did market reject at first place? Again, the intact level, which was at this zone of action, right? When the intact level was formed, how do you look into the perspective? First allocation will be in preservance of first come first serve, right? So this is our first come first serve candle, which will be moved in particular off to the retracement because there is a change of character at the point. So what do we take the consideration over here? M1 formation. When there is a M1 formation, you look for 150 and 200, right? So this is the formation that we look for. यहाँ पे इस point of action में अगर notice कर रहे हो, what did market tend to showcase us? यहाँ पे हमें market क्या देखा है? Let's come to the positional point.
राइट? ये जो मूवमेंट जितना भी ड्रॉप डाउन था, क्या उस मूवमेंट अलोकेशन में, रितेश, फोकस ऑन दिस पॉइंट, राइट? डिड वी नोटिस अ वॉल्यूम स्पाइक? नो, right? Matlab, market is still in the iceberg zone. When the market is in the iceberg zone, it will always tend to continue the movement, right? So with the continuity of the movement, let's come to 1 hour and check. Did we have a spike here at the mark zone? No, right? It was in a iceberg zone of action. When the iceberg zone of action is created, always focus the movement is continued till the target of TTS 2.0, राइट? बीच बीच में आपको लेवल्स मिलते रहेंगे, बट आपको यहाँ पे डर के ट्रेड एग्जिट नहीं करना है. यू हैव टू वेट. Once the waiting is done, what did we notice? 200% rejection. So let's mark out 200% minimality का. उसके साथ ही हमको यहाँ पे three wing आया, right? How do we look into three wing perspectives? Their setup one. This is for Sudhir. So always remember there should be three wings. One, two, three. And both three candles should be with the high wick range. When the high wick range is created, then we can consider it as three wing setup. Execution on the fourth candle once it creates an intact and then continue the movement. Right? This is the first setup. Second setup is formed in pursuance of red three candles. One, two, three. Fourth candle will be a strong green candle with rejection as to be one setup, continuity in the movement, right? So these are the two types of three wing setups what we follow. With that, what did we notice? We had a three wing setup. With that three wing setup, market continued the movement. Just for the safer side, हमारे पास ऑलरेडी M2 पेंडिंग था, सॉरी M1 200% पेंडिंग थी. यहाँ पे जब M1 200% पेंडिंग रहती है, डेफिनेटली वो कंप्लीट करने जाएगी. जो बिगिनर्स है वो क्या कर सकते हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का सप्लाई ले सकते, राइट? इफ यू नोटिस हाई विक रेंज है तो विक टू विक हमने लिया है. सो जैसे हमने विक टू विक अलॉट किया यहाँ पे मूवमेंट में, व्हाट डू वी सी? ब्रेक एंड कंटिन्यू. व्हेन देयर इज अ ब्रेक एंड कंटिन्यू, 200% is your target. In this scenario, 200% got cleared at exact range of M1 to 200%. Yes, right. When it's completed, you look for an exit of a partial quantity. Once the partial quantity is exited, what did we notice? Did we have a setup over here? No setup formation. Why did the market came down? Intact levels, right? With the intact level, there was a liquidity grab point. वो complete करने के लिए आया था. ये मैपिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए you have to understand the first come first serve again. The trade was not there, no doubt, but the movement नीचे आया because the liquidity of the intacts is very much important to carry forward in one single direction. Let it be beginner, let it be advanced, it doesn't matter, right? Always remember one thing, the follow through of the movement starts from first come first. High week है, जब high week रहता है तो we directly mark it from the wick range. From the wick range, 100% break and continue, there is no retracement showcased. When there is no retracement showcased, 150% will be the first target, right? What did we notice? What is the formation? 1, 2, 3. Setup 1, 1, 2, 3. Setup 2. Both the confirmations were provided in the directions of the market which was bullish, right? यहाँ पे हमको ना शॉर्ट के तरफ दिखा ना लॉन्ग के तरफ दिखा. एक सेलिंग प्रेशर दिखी थी यहाँ पे, जो कि 0.3 फिप लेवल से आया था रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए. वो इस कैंडल में आप देख सकते. जिनको भी डाउट है आप डालो फिप लेवल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. दिस इज 0.3 लेवल जहां से most of the retailers look for a trade, right? So with that formation, we had looked for an add-on. With the add-on, continuity in the movement, right? So जैसे continuity in the movement develop हुई है, what are the next steps that we look for? Okay, TTS concepts का formulation बने रहना है.
स्विंग लो स्विंग हाई रिट्रेसमेंट पॉइंट, फर्स्ट टारगेट हिट हो गया, फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद द नेक्स्ट मूवमेंट, बिकॉज वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है, वॉल्यूम जब चेंज नहीं होता है तो डायरेक्शन रिमेन्स द सेम, राइट? व्हेन डायरेक्शन रिमेन्स द सेम, कंटिन्यूटी ऑफ द मूवमेंट टिल द नेक्स्ट लेवल ऑफ अलोकेशन विच इज स्विंग लो स्विंग हाई एंड रिट्रेसमेंट। उसका टारगेट्स अभी भी 70 तक है, जो कि उससे पहले ही एक रिट्रेसमेंट ले रहा है टू ट्रैप ऑल द रिटेलर्स विद द पैटर्न ऑफ एम टुवर्ड्स द शॉर्ट। ठीक है, इसके साथ मूवमेंट कंटिन्यूटी में आई, जैसे मूवमेंट कंटिन्यूटी में आई, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कौन सा है हमारे पास यहाँ पे, दिस वन, करेक्ट? विल इट बी टिल हियर और विल इट बी टिल द wick? It will be entirely till the wick, because it's a high wick range. High wick range में जब भी point of action develop होती है, first action plan will be taken under the consideration from the wick candle, not prior to that. With that formation M2 form हुआ, M2 form होने के बाद direct target is 200 and the moment is still 200. कहाँ से rejection ले रहा है? Exact 200 point of actions, right? So यहाँ पे आपको एक चीज कंफ्यूज कर रही होगी कि यहाँ पे ये जो मूवमेंट है विथ हाई वॉल्यूम डेवलप होके चल रही है, करेक्ट? बट ये हाई वॉल्यूम आया क्यों? एट फर्स्ट प्लेस दिस वाज अ न्यूज डे, न्यूज मूवमेंट, सो न्यूज मूवमेंट का वॉल्यूम हम कंसिडरेशन पे लेते ही नहीं है, करेक्ट? सो जब कंसिडरेशन पे ही नहीं लेते तो फायदा होगा नहीं ना। सो ऑलवेज रिमेंबर, न्यूज कैंडल्स का जो हाई वॉल्यूम स्पाइक रहता है उसे हम कैलकुलेशन या कैलिब्रेशन में कभी लेंगे नहीं, ठीक है? So with that, currently market is in our direction itself. Each and every point, the market is connecting to the intact and moving. So हर एक point of action में add-ons कैसे देखा जा सकता है? Let's start with a small process of that, right? So first come first serve का demand, allotting point, right? 200% से rejection लिया, high wick range है, high wick range है तो what do? We take it from the wick. Wick 1, break and continue. Wick 2, right? So wick 2 also break and continue. What is the next step that we look for? Second serving. What is the second serving indicating? The movement of LG point. LG is liquidity grab, guys. Okay. So with this, we allot again the new movement, right? With the new movement structure, यहाँ पे सेटअप फॉर्म हुआ है नहीं हुआ है? सेटअप फॉर्म नहीं हुआ है तो ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन देखना ही बेकार है, करेक्ट? बिकॉज मार्केट उतना ही मूवमेंट देगा जितना हमारा लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ एक्शन का इंटैक्ट रेंज पेंडिंग है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? So with this, we got a second allocation point of demand. It's matching with our intact levels. With the intact level confirmation, market didn't close below the 200% of second serving. उधर से continuity in the movement towards the long develop हुई, right? Again, यहाँ पे allocation देखोगे M2 को, M2 तो यहाँ पे है already, right? जहाँ से market identify कर रहा है कि वहां से फिर से एक expected rejection मिलेगा, उस रिजेक्शन के साथ अगर नोटिस कर रहे हो, डेफिनेटली वी गॉट अ रिजेक्शन, बट एग्जैक्टली विद द इंटैक्ट पॉइंट ऑफ S2B1 मार्केट टेंड टू रिवर्स अगेन। बट ये कंफर्मेशन कहाँ तक जाएगी करके जो है, दैट यू विल आइडेंटिफाइड थ्रू द करंट मूवमेंट। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ये पॉइंट है, allocation will be taken in preservance of wick, break and continue, जो कि हमारा TTS का टारगेट कहाँ पे है? 70 के पास, 150% should be at 70. This is the major point of lookouts that you guys should have always in the market, right? Keeping in mind 100% के ऊपर जाके M2 से rejection ले रहा है, so we wait for the right opportunities. जो ट्रेड में नहीं है वो लोग फिर से सेटअप फॉर्मेशन पे ट्रेड ऑफ एग्जीक्यूशन देख के चल सकते हो। दिस इज गोल्ड, कोई भी डाउट्स है प्लीज डू आस्क। Got it, thanks, no worries.
No doubts. Clear. Good. नहीं नहीं स्मिता मैम, reallocation is a bit on a different mode. डायरेक्शन गलत पकड़ रहे. Good morning, Eric. How are you doing? No doubts. Sure. Sir, what made you look for long in the previous stream? You told us that you are not convinced for long. I was not convinced for long in this point. Please rewind and check. जब तक लिक्विडिटी कंप्लीट नहीं होती, आईजी पॉइंट ऑफ एक्शन पे सेटअप क्रिएट नहीं होता है, हम लॉन्ग की तरफ नहीं देखेंगे करके ही बोला था. Because we don't execute the trades in running, we wait patientfully till the targets come into the play and then execute the trades, right? So in that perseverance, we had to take an action with the setups only. Without setups, we are not executing the trades. Okay? It's a very clear vision, guys. Intact complete नहीं हुआ था, intact complete नहीं हुआ था, complete करेगा ना. Liquidity grab point बीच में generate हुई थी, right? Each and every point of action is taken under the consideration till the movement is not been aligned. So simple and easy setup, right? हमेशा एक चीज याद रखो, जब भी एक मूवमेंट आता है, उस मूवमेंट को रिफर्बिश लिक्विडिटी को अलॉट करने तक वो कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रेंड में कभी बनेगा ही नहीं, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होना था तो फर्स्ट पॉइंट, ये गैप छोड़ना ही नहीं चाहिए था. ठीक है. नो डाउट्स. वेरी गुड मॉर्निंग. हाय देयर. डीप मीनिंग मोटिवेशन. नाइस नेम. नाइस. नो वरीज. राइट. बीटीसी का भी प्ले आउट वेरी सिंपल एंड इजी. कम टू 1 hour. What is the major allocation point? Minimality M2, right? M2 के बाद एक रिजेक्शन दिखाया था हमको, उसी रिजेक्शन के साथ कंटिन्यूटी इन द मोमेंट, एग्जैक्टली मार्कअप सेम पॉइंट से रिजेक्शन, ना थोड़ा ऊपर ना थोड़ा नीचे, राइट? सो यहाँ पे क्या आपने शॉर्ट किया था करके अगर आपका डाउट है तो नहीं, बिकॉज विदाउट सेटअप वी डोंट एग्जीक्यूट. ओके. Keeping in mind this is just a 6,000 points drop what we had got on an add-on, so add-on नहीं हुआ है, बट जो 24,000 से जो ट्रेड है, 25,000 से जो ट्रेड है, वो चल रहा है, right? So allotting this point, what is the major things that you will be looking here? Come to 4 hours.
with 4 hours allocation, what are the major setups that we'll be looking for at the current point of action? Serving one. How will you look for a serving one? Serving one starts from the major action point of high zone. The high zone point is taken under the consideration of this moment. This allocation will get into the play post the supply. ये supply और A supply complete हुआ था. Because 4 hours screening है, allocation will be taken in pursuance of top minimality M1 formation. When there is a minimality M1 formation, 150 to 100% target. With 150 to 100% target, what is the next steps that you will be looking for? Surplus. Surplus allocation कहाँ से allot होगी? From the top point till the first rejection. Sorry, till the last rejection. Bearish moment है ना? Till the last rejection. So this is where the last rejection was placed with that surplus movement. What is the next step that will be taken under the consideration? From where we'll be marking this surplus? कहाँ से मैप होगा? Correct, from the last point of the movement. So last point of the surplus is taken under the consideration at this point, जहाँ पे हमारा previous session का marking 200% का था. 100% break and continue without any restrictions. Target will be 150 200. Right? So this is where exactly market took the rejection from. Right? क्या ये movement continue होगा? Definitely yes, it will continue, but post completing the intact levels of the movement. Right? At this current point, because मेरा surplus mapping is at 4 hours, what is the next step that which will be taken under the consideration? 4 hours का retracement point. The retracement point will be at the zone of this. Why am I not taking this entire wick? Because this was still a bearish candle. Post that there was two candle movement towards the short. Then we had got a retracement. अगर यहाँ पे ही green candle आती, then I could have taken a measurement from the wick to the green candle closure. Okay? So this will be the first point. क्या मेरे पास यहाँ पे त्रिशूल form हुआ है? नहीं हुआ है. So I'll just mark out for my retracement point. So retracement point 1, 2. Right? This is the first range of motion that we'll be getting for execution in the long trade. With that, market has tend to continue the movement. Now we'll come to 1 hour, where we'll find the Trishul formation again. Right? So in this moment of action, do we have any Trishul formation? No Trishul formation. So Sunday ka movement hai. Sunday ka movement, the first come first serve movement will be taken under the consideration of the supply and mapped on the conversion of the demand. Why? At first place, we had a change of character. When change of character comes into the play, what is the conversion that we take? Supply converted into demand. Where is the retracement demand that we are having? This is the retracement demand. Why are we not taking this demand, sorry, this supply to convert into the demand? Because we don't have a break of structure to take as this point as retracement, right? So always remember, whenever you guys are doing the conversions, there should be a break of structure to allot with the change of character in the conversion point. Conversion point allot hua, POI range movement break, 100% break and continue. With the break and continue, what do we notice? 150% rejection. Do we have a threshold in 1 hour? Yes, we are having a threshold in 1 hour. We can expect this movement to come down till 111, 110 again because liquidity grab point and intact levels which has been followed through. Any doubts in BTC? Sir, Q1 and Q2, Q3, Q4 में 0.618, 0.5 and 0.375 का यूज बता देना एक बार प्लीज. 0.618, 0.5, 0.375 का यूज सिर्फ Q1 में होता है. So follow, there is another video on M2, right, which is followed with the golden ratio and the parent ratio of the gold, right? On that formation, use that for the current Q3 and Q4 movements. Okay, DMM.
अरे आपका डेट बताओ, कौन सा डेट में था डाउट? You haven't mentioned the date. Please mention the date. Okay. जब तक proper formation of the setup is not being done, we'll not look for an execution which is in not our direction. Simple. गोल्ड में भी अगर हमें सेटअप मिलेगा तभी ही शॉर्ट करेंगे, तब तक के लिए लॉन्ग में ही रहेंगे, राइट? So if you notice, each and every movement is taken under the consideration of coverance and there is no intact pending. So direction is still bullish. जब तक हमारा वॉल्यूम्स चेंज नहीं होता है एंड रीब्रेक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होती है. 14th July. Too bad, man, too bad. We'll do it tomorrow. And in Sweden, short में अगर समझाना आ रहा, it doesn't complete either ways जब तक volume में change नहीं दिखती है. Till the time you don't find a volume spike, the market will not tend to move. If the market has come down, taken your demand first, then continued the movement towards the long, means there could have been an intact play which will be there. Just notice towards your left hand side, if there is an intact, then the market could tend to move on the same direction post completing the intact. Okay. Any other doubts, guys? Please do ask. Don't hesitate to ask doubts. Ambika, where is your system trailing down? Please follow system trailing. Why don't you guys follow it? How simple is it? Where is your MTSL trend line? Hmm? Stream will be there for next 20 minutes. Joe will outside. Please do ask. From Dhanteras, we'll start Indian markets as well soon. क्या हो गया वेंकट? गुड मॉर्निंग. ओके सर करके लिखे. आपका क्वेश्चन ही नहीं देगा मेरे को. Okay.
मॉर्निंग ट्रेड रनिंग विद 170 पिप्स 1000 बार बोला वरुण जूम में बोलो यार ओके वेंकट नॉट एन इशू जितने भी नए लोग देख रहे हो एक ही चीज बोलूंगा कोई भी स्ट्रैटेजी कोई भी फॉर्मूला कोई भी कैलकुलेशन कोई भी कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो 6 महीना बैक टेस्ट करो 6 महीना फॉरवर्ड टेस्ट करो 1 महीना लाइव एनालिसिस करो उसके बाद ही उससे पहले नहीं and guys every alternative days now the live streaming will be for members 1 day and public 1 day okay going forward starting from today is public tomorrow will be for members so all the members don't miss it out this is for each and every kind of members the live streaming will be there only members video so how far can be the liquidity is free so that it could be considered it as M3 आपको M3 फॉर्मेशन Q3 में Q4 में नहीं दिखेगा वो सिर्फ Q1 में दिखता है because Q1 is the only place where not all the companies will be playing in the same direction so उसके वजह से Q1 में थोड़ा ऊपर नीचे होता है that's where the M3 comes into the play Q2 से alignment शुरू हो जाती है तो it could be in a same direction okay so that's the reason from last few months we are not following M3 we are following only M1 and M2 definitely sir if time per if time permits definitely डालूंगा Q1 Q2 के ऊपर got it good to hear that सोनू आपका मैसेज आया था अभिषेक has shared if you are there in live streaming आपका सेटअप 3 सेटअप 2 एंड सेटअप 1 ना सही मैप हुआ है
बट थोड़ा चेंजेस चाहिए उतना ही. But rest all, allocation wise of TTS 2.0, everything you guys have done a great job. Okay. In last 5 sessions, you have picked up really good and you're doing a great job. I could say that. Sir, should we completely disregard the high volume wave that happens during the news for the whole session, or should we disregard it for the specific time where news happen? No, no, you should let go the entire moment, right? अगर high spike दिखाए तो definitely it will come down to the nearest demand completion or the supply completion. Post completion of that, market will continue the movement. Okay. सर वीडियो में फुल एक्सप्लेन क्या करे कोई भी मेथड क्योंकि हम बिल्कुल न्यू है ट्रेडिंग में. सो आपका नाम क्या है? डीप मीनिंग मोटिवेशन. थैंक यू रमेश. वेलकम टू द फैमिली एलिट सर्कल. नवाब जी आप क्या पढ़े हो? इट्स इररिलेवेंट आई नो, बट सही जवाब दो गलत जवाब दो मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, बट दो कुछ ना कुछ दो. क्या पढ़े हो उसके ऊपर. Someone is going to get a nice one soon. हाँ, रैंडम क्वालिफिकेशन ही दो चलेगा.
Beautiful guys, 100 pips running. फर्स्ट ट्रेड है, जिंजिन का फर्स्ट ट्रेड है, टेक होम इज 80. सो सिंपल बीए. ओके. सो से मी वन थिंग, अगर आप बीए पढ़ रहे हो, राइट, क्या आपको पूरा सिलेबस एक ही सेशन या एक ही क्लास में कंप्लीट कर देता है? राइट. सो द सिमिलर वे ट्रेडिंग में एक चीज याद रखना, अगर आपको किसी का भी स्ट्रीम में सिर्फ एक वीडियो देख के आप इम्प्रेस हो रहे हो ना, आप गलत हो. एक वीडियो नॉलेज शेयरिंग के लिए होता है, उसके बाद उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको लाइव आके सीखना पड़ता है. राइट. जब आप सीखने लगोगे, द कॉन्सेप्ट will be clear whichever the strategy concept you follow. वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में जाते हो. इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में वीडियो काम नहीं आएगी. राइट. जो आप लाइव में रोज देख रहे हो, रोज सीख रहे हो, वो काम आएगा. Videos, what you see is a knowledge, but to execute the same thing in the market, you have to learn and observe the things every day, right? So आपने वीडियो Q1 का recently देखा है, correct? So in proportionate, I'm not blaming you here, right? It's a simple thing that I'm explaining, that Q1 का समझ आपको Q1 में ही आएगा. मैं वीडियो भी डाल दूं, आप इन डिटेल वीडियो भी डालूंगा, तो आपको Q1 में ही समझ में आएगा. जब तक वो आप लाइव एक्सपीरियंस करोगे ही नहीं, तो वो यूज ही नहीं. राइट. So if you are saying that I saw a video, okay, it's very simple. It touches this EMA, I'll execute the trade over here. It touches this RSI, I'll execute the trade over here. Right? So in that perspective, what will happen? You won't be able to survive in the markets. So, for degree, you have spent 3 years. I'm not asking your 3 years. I'm asking your daily lookout for at least 3 months, so that you guys can do the best in the markets. राइट. एक बार सीख लो, उसके बाद जब जब लाइव डाउट आता है तब आके डाउट्स पूछ लेना, उतना है. Simple as that. Right. So just by video, don't think that this is very easy. No. For that, first you have to understand a movement. Why is this movement coming into the play? Once you understand that movement coming into the play, you will be able to understand why exactly the movement is going to play. So that's when you will develop that new knowledge, and that's when the mind gets stored in the subconscious way. With that, you can analyze it without being in the life, right? That's learning. By watching a video, you can't learn. By watching a video, definitely you can understand, okay, this is the right one. But till the time you don't understand, you won't be able to implement. Sweet and simple. Okay? Don't take it in a bad way, Nawab. It's for your good.
सर लास्ट फ्राइडे को मैंने 200 पिप्स का टारगेट लिया आपके लाइव सेशंस से लर्निंग करके. It was my first trade by seeing your YouTube lectures and live session. Beautiful, man. Happy for you, Ramesh. Keep it up. Keep growing. But don't forget that you have to keep learning as well. Okay? But happy for you. No doubt. क्या लिखा है 1432 नवाब. हमने वीडियोस डालना इसके लिए बंद किया है क्योंकि सीखने वाले लाइव में सीखेंगे. वीडियो से कोई सीख नहीं सकता है. सिंपल एज दैट. आपको आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, देखने के बाद कैसे चल रहा है वो एनालाइज करना पड़ेगा. Right, then you will start implementing the same thing on your charts. That's when the growth happens. You didn't hurt anyone's sentiments. Thank you so much, sir. No worries. Sir, कुछ ऑफर छोड़िए. Who is this श्रव्या पाटिल? टेलीग्राम में एक स्क्रीनशॉट आया हुआ है. सर बुक के ऊपर ऑफर छोड़िए दिवाली. Parth, good morning, Parth. What is S2B1 pattern? S2B1 pattern is called a execution pattern where you execute the trades on the third candle. So in S2B1 there are multiple setups, but for you guys one setup is enough, which is one, two, three. First green candle, second green candle, third green candle on the conversion, look for an execution. Okay, Parth? So Shravya Patil, the offer for Diwali, 35,000 ka book will do it for 32,500. Okay? And this offer implies only till Diwali. Uske baad the prices will remain the same, which is 35,500. Guys, stream will be there for next 5 minutes. जो भी doubts है पूछ लेना please.
अगर किसी ने भी कुछ नोटिस किया है, what we have got over here on the formation of this, people who are following with the book, they know what is the target. Okay. Yes, अगर greed को साइड में रखते हो तो definitely you will be able to achieve the new heights. With greed, there is one more thing which you have to keep aside, that is FOMO executions, and you have to build one new thing, that is patience. जिस दिन आप लोग पेशेंस बिल्ड करना सीख गए, आराम से बैठ के मार्केट देखना सीख गए ना, मूवमेंट के टाइम, अकाउंट में पैसे रहने के टाइम, समझ लो उस दिन आपने मार्केट जीत गए, सॉरी मार्केट को जीत गए, राइट? बिकॉज आपके पास उतना पेशेंस रहेगा कि लाइक ओके, मार्केट पूरा मूवमेंट ऊपर गया है यहाँ पे, राइट? जो कि पॉइंट ऑफ मूवमेंट ऑफ दिस मूवमेंट इज ऑफ 430 पिप्स. इस 430 पिप्स में आप बिना फोमो लाए आराम से बैठना सीख गए ना, उस दिन आप ये मूवमेंट्स पकड़ना शुरू कर दोगे 800 पिप्स, राइट? इस चक्कर में आप एंट्री करने जाओगे ना, आप क्या करोगे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट में निकल जाओगे. बट जिस दिन ओके इंटैक्ट लेवल नीचे है, इंटैक्ट लेवल पे सेटअप फॉर्म होने दो, वहां से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे करके बैठना शुरू कर दिए, उस दिन आपका जर्नी, रियल ट्रेडिंग जर्नी बिगिंस. ट्रस्ट मी एंड टेक दिस इज माय वर्ड फॉर यू गाइस. जिस दिन ये कर लिए ना आप लोग, उस दिन से खुद आप में डिफरेंस देखना शुरू कर लोगे. आप वो मूवमेंट भी नहीं छोड़ते हो. 150 पिप्स, 430 पिप्स एंड 800 पिप्स, यू वांट ऑल. फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंपेयर करना बंद करो ना. कंपेयर करना है तो कल आप कैसे थे और आज कैसे हो, उसमें कंपैरिजन करो, राइट? गुड मॉर्निंग रमेश रामपुरम. You can connect on Telegram. Team will help you out with that. We don't sell courses. In buying out the book, they will help you out. And if you really want the guidance, they will allot you to one-on-one sessions if needed only, and if you have the proper backup. If there is no backup, you won't be selected in the criteria. So if the criteria is not been selected, you won't be part of the one-on-one sessions. Simple as that. Hope I have answered your question, Ramesh. What are the criterias? Simple criteria. Either three of them should be your thing. You should be working, right? You should be having 6 months of backup, or you should be having a second source of income. Criteria one. Criteria two.
We take only people who are eager to learn and grow, because we don't provide tips, we don't provide entries, we don't provide setups. We provide analysis which you guys will map by yourself. You guys will implement in your journey for your better understanding to execute the trades, because it's your hard earned money to execute the trades, right? कोई टिप दे दिया, आपने ट्रेड ले लिए, नुकसान हो गया, जो टिप दिया वो बंदा खुश है, बट जो ट्रेड लिया है वो बंदे का क्या? So TTS is entirely about learning. No tips, no handlings, only analysis and viewpoints of learning how the market works. Third thing, 100% focus आप दो, 1000% focus हम देंगे, ये गारंटी है. किसी ने M2 करके लिखा है, कौन है? आर्या. Yes, you're right, Arya. It's M2. Okay. So जो भी concept follow कर रहे हो, 6 months का back testing, 6 months का forward testing. With that, what is the next thing that you guys have to do? 1 month of live analysis. With 1 month of live analysis, come with a small capital, execute, compound. While compounding, learn to protect the capital. While protecting the capital, you have to learn one more thing, that is risk to reward. Once you learn risk to reward, there is the third thing what you will add on, that is mindset. To build a mindset, focus on meditation and start reading books. If you guys are not reading books, start with 5 pages a day. With that, control on your FOMO, bury the greed, and let the fear get out of your mind. Once that three happens, learn to have patience and waiting skills in the market. Once this has been deployed, then you will be able to suffice and create your own business in this trading journey. This is Nitesh signing off. मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.